Hello my dear students, welcome to CMI's online classes. In today's class, in this video, for the students of Standard 7, we will continue with chapter 13 of our English grammar, that is active and passive voice. In our previous video on the same chapter, we have already understood what is voice, what are the kinds of voice that are active and passive voice with the definition and examples. And in this video, we will understand the process of changing sentences in active voice into passive voice. Okay students, as we have already understood what are passive voice and active voice, let us go through some important points to understand before changing the sentences in active voice into passive voice. What is written here? Since the object of a verb in the active voice becomes the subject of the passive voice, only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. So before this video, in the previous video on the same chapter, I've already explained you that the sentence may have a subject and an object. Okay. And the subject is that part of the sentence about which the sentence is written, and subject is that noun or pronoun which performs the actions in sentences, and object is also the noun or pronoun, but the object is the receiver of the actions. Okay, but I have also told you in the previous video that a sentence always has a subject. Okay, a sentence is incomplete without subject, but a sentence may or may not have objects. Okay, so what is written here? Since the object of a verb in the active voice becomes the subject of the passive voice, so when we change the sentences in active voice into passive voice, we have to make the change of subject into object and object into subject. Okay, like here, if you see this sentence, birds build nests. Here, who builds nests? Birds. Birds is the subject here. And what do the birds build? What do the birds build? Nests. So nest is another noun. Birds is also noun. Nests is also noun. Okay, but birds is the doer of the action here, so it is the subject. Okay, and nest is the receiver of the action, this is object. And the action word is build. Okay, this sentence is in simple present tense. Okay, so I have also told you that when we change the sentences in active voice into the passive voice, we have to make use of to be verbs plus B3. That means all the main verbs in passive voice will change into B3 form of the verbs. Okay, and before that we have to make the use of to be verbs. Okay, like here, before that we have to change the place of subjects into object and object into subject. जब हम एक सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में लिखा गया हुआ है उसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की बात यह है कि हम जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. लाइक हियर, birds build nests. Here nests are built by birds. So here जो birds सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में birds ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. ओके, जो नेस्ट यहाँ एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड बिफोर चेंजिंग द सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. ओके, and what is more written here is only transitive verbs can be used in passive voice. sentences पे अगर verbs transitive है तो उसी sentence को हम passive voice में चेंज कर सकते हैं. जिस एक्टिव वॉइस में
जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया हुआ है और उस एक्टिव वॉइस में लिखा गया हुआ सेंटेंस अगर उसका वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसी ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. Why transitive voice? Because we know that why transitive verbs? Because we know that transitive verbs are those verbs that have object in sentences. So अगर सेंटेंस में both subject and object हो तो उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. अगर verbs intransitive हो, अगर एक्टिव वॉइस में अगर verbs intransitive हो, intransitive मीन्स अगर verbs का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस पे चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते. ओके, सो लेट अस गो अहेड विथ मोर एक्सप्लेनेशन. when the verb is changed from active voice to passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes subject, and the verb in the passive voice and the subject is placed at the end with the preposition by. So अब हमें ये समझना है, जब हम जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया हो उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. और जब हम जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है उसे जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे. ओके, लाइक हियर, birds build nests. This sentence is in simple present tense. So now birds is subject here. Now I have made the subject, I have changed the subject into object in passive voice. The sentence in passive voice is nests are built by birds. Okay. So now here what we have to understand is birds जो subject है वो object बन गया है passive voice में. Nests जो object है active voice में वो बन गया है subject passive voice में. But before that what we have to understand is, as I have already told you, that we have to make use of to be verbs plus B3. तो यहाँ पर build, ये जो B1 form of the verb है, ओके, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यहाँ पर जाकर बनते हैं, पैसिव वॉइस में जाकर बनते हैं B3. लेकिन B3 से पहले हमें टू बी वर्ब्स का यूज करना है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंसेस होता है एक्टिव वॉइस में, उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें या तो इज, एम, आर का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो यहाँ पर इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. दैट नेस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने टू बी वर्ब से हमने आर का इस्तेमाल किया. इज, एम, आर, वॉज एंड वॉर. ओके, बी, बीन, बीइंग. सो दीज आर द group of to be verbs. Okay, I hope you have understood the process of changing sentences in passive voice from the active voice. Okay, सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है. और जो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में है उसे हमें B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में चेंज करना है, और जो B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में चेंज करना है और उससे पहले हमें टू बी वर्ब्स का यूज करना है. तो नाउ वी विल गो विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस इन डिफरेंट टेंसेस in active voice into passive voice. Okay, so let us see here. This sentence is in simple present tense. Simple present tense में अगर sentences होता है तो जैसे see here, Pratima writes a letter. So what is the subject here? Pratima. Okay, what is the object here? A letter. Okay, what is the action of writing here? What is the main verb here? Writes. Okay, B5 form of the verb. Why B5? Because the subject is singular, Pratima. Okay, now what we have to do when the sentences are in active voice and if the sentences are in simple present tense, when we change those sentences into passive voice, we use is, am or are in passive voice. Here now we have to, before changing this sentence into passive voice,
वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. सो यहां पर जाकर क्या होता है, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसे हम अ लेटर सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में. सो उससे पहले हम क्या कर उसके बाद जो प्रतिमा जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसे हम पैसिव वॉइस में प्रतिमा को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. और ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे. ओके, लाइक अ लेटर इज रिटन बाय प्रतिमा. तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम या तो इज या तो एम या तो आर में आर यूज करते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ टू बी वर्ड्स. सो यहां पर जाकर बनते हैं अ लेटर इज रिटन बाय प्रतिमा. अ लेटर. ओके, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे. प्रतिमा बनाए हैं, जो प्रतिमा जो सब्जेक्ट है यहां पर उसे हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं पैसिव वॉइस में. ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी नो दैट वी यूज टू बी before form of the verbs. Okay, like Pratima is writing a letter. Again, Pratima is subject here, is writing is verb here, a letter is object here. Now again we will change this object into subject and subject into object. We have changed here. You can see the example here. Okay, but what we have to know is the use of verb forms. Okay, now I have told you that the main verb is changed into B3 form of the verbs. Okay, now before that we have to use to be form of the to be verbs. Okay, is written here. Okay, again the sentence is continuous. We use ing form of the verbs. So being is the ing form of the verb from the group of to be verbs. Okay, so being हमने use किया है. So अगर sentence present continuous tense पे हो तो हम being एज द बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे. ओके, तो अगर सेंटेंस लेटर्स हो, लेटर्स आर रिटन बाय प्रतिमा हो तो प्रतिमा इज राइटिंग लेटर्स हो तो लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय प्रतिमा होगा. अंडरस्टूड. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट वी ऑलरेडी नो दैट परफेक्ट टेंसेस में हमें B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज करना है. ओके, सो नाउ हियर प्रतिमा हैज रिटन अ लेटर. सो नाउ प्रतिमा सब्जेक्ट है, उसे हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिया प्रतिमा को. लेटर ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट में हम चेंज कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव डन इज लेटर हैज बीन रिटन बाय प्रतिमा. सो यहां पर बीन, व्हाई हैव वी यूज्ड बीन हियर? बिकॉज बीन इज द ग्रुप ऑफ टू बी वर्ब्स. इट इज B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, टू बी वर्ब्स, अगेन B3 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके, लेटर हैज बीन रिटन बाय प्रतिमा. ओके, अगर ये सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में अगर लेटर्स हो, प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल्स हो, प्रतिमा हैज रिटन लेटर्स हो, तो लेटर्स हैव बीन होगा. प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज हम यूज करेंगे या तो हैव यूज करेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, यहां पर सब्जेक्ट ऑल लेटर है तो हैज है, अगर लेटर्स होता तो हैव होगा. अंडरस्टूड. नाउ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव में क्या है? प्रतिमा रोट अ लेटर. ओके, सो अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस हो, अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में हो तो यहां पर हम वॉज और वॉर का इस्तेमाल करेंगे. ओके, एज द फ्रॉम द ग्रुप ऑफ टू बी वर्ड्स. अ लेटर वॉज रिटन बाय प्रतिमा. अ लेटर है, दैट्स वाई वॉज है. अगर लेटर्स होता, प्रतिमा रोट लेटर्स होता, रोट द लेटर्स होता तो यहां पर द लेटर्स वर होता, were written by Pratima. Understood. Now past continuous tense है. Let us see go with another tense. Past continuous tense है. Pratima was writing a letter. So again we have changed the sentence in passive voice from subject to object and object to subject. Okay. A letter was being written. Why being? Being is before form of the verb and in continuous tense we use before. Okay, and see here. We have used was and were is used in passive voice. The sentences in passive voice if the sentence is if the subject is singular, and were is used if the subject is plural. Okay, a letter was written by Pratima. अगर letters होता तो the letters were written by Pratima होता. Understood. Now past perfect. Come to past perfect. Active voice.
Pratima had written a letter. Now when we change this into passive voice, Pratima becomes object here, a letter becomes subject here. Okay, a letter had been written by Pratima. So had been is from the group of to be verbs. Okay, understood? So I hope you understand. You understood this explanation. Okay, now come to simple future. Active sentence. In active voice we have Pratima will write a letter. Pratima will write a letter. Okay, now when you change this sentence in simple future tense into passive voice, now a letter object is changed into subject a letter. Pratima subject is changed into subject by Pratima. That before object we have to put the letter the preposition by. Okay. Now what is more to understand here is, now in passive voice also the sentence the tense will not change. What we have to understand, in active voice whatever the tense will be there, in passive voice the same tense will be there, but only the structure of sentences will be changed. Okay, understood? The position of words will be changed. Okay, so here a letter will be written by Pratima. So before after changing the active sentences in active voice into passive voice, we have to change the main verb into B3. Before that we have to make the use of to be verbs. B is from the group of to be verbs, because after will or shall we have to use B1 form of the verb. B is the B1 form of the verbs from the group of to be verbs itself. Okay, I hope you have understood. Now let us go to simple future with going to, that means with continuous, future continuous tense. Okay, Pratima is going to write a letter. Okay, a letter is going to be written by Pratima. So write is changed into written, B3 form of the verbs. Okay, now we have written, we have used B as from the group of B verbs. So B verbs plus B3 is passive voice. Okay, if you write Pratima is writing a letter is being written by Pratima. Okay, a letter is being written by Pratima will be writing a letter. A letter will be being like here. A letter is going to be written by Pratima. Understood? Now let us see about the future perfect. Pratima will have written a letter. Now here also Pratima subject है, उसे हम object में change कर रहे हैं passive voice में by Pratima. Before object we have to put by, preposition by. Okay. Now a letter जो object है active voice में उसे हम change कर रहे हैं passive voice में subject में. A letter will have been written by Pratima. Okay, will have been. Future perfect है तो will और shall use करना है. After that have verbs use करना है तो will और shall के बाद B1 होगा तो have B1 है from the group of have verbs. Okay, after that B3 भी यूज करना है और मेन वर्ब से पहले हमें बी वर्ब का भी इस्तेमाल करना है. तो हैव के बाद हमने बीन यूज किया क्योंकि हैव के बाद B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. तो यहाँ पर बीन क्या है, B3 फॉर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ टू बी वर्ब्स भी है और ये इटसेल्फ बी वर्ब्स भी है जिसे हमें यूज करना है मेन वर्ब्स के आगे. तो पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब्स होगा वो सारे के सारे B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में होगा. अंडरस्टूड? I hope you have understood. Now in our next video we will understand changing sentences in different forms like assertive sentences, negative sentences and interrogative sentences into in active voice into passive voice. Okay, so I hope you have understood my explanation till here. So in our next video we will understand how to change sentences in different forms into in active voice into passive voice. Okay, but for today's class I would like to stop here. I hope you have understood, but still you have any kind of doubts, kindly clear your doubts during the class period, raise your questions and clear your concepts. Okay students, but I would like to thank you for being the part of my today's class. Thank you so much for being a part of my today's class, being the part of this video. I hope you have understood the process of changing sentences in different tenses
when we change the sentences in different tenses in active voice into the passive voice. Okay, but still if you have any kind of doubts, kindly raise your doubts, raise your questions during the class period. Okay students, thank you so much for being the part of my today's video. Thank you so much.